Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in today's session, we are going to start with a very important topic, that is procedure oriented programming in JavaScript. Like in JavaScript, how we can write logics in the form of functions, and then how we can call those functions any number of times. Getting? To define once, call any number of times. That concept we'll be learning. That is called as procedure-oriented coding. Okay. And JavaScript is a multi-paradigm programming language. It supports structured scripting, procedure-oriented scripting, object-oriented programming. So different programming paradigms are supported. Okay. Now, what is a function? That first we will discuss. So you can say function is a named code block. It is a code block. That code block is performing some specific task. Maybe the task is simple task to any complicated business logic can be there. But a function is a named code block. A code block which is performing some task. And to that you have given some meaningful name. Get it? And this task will get executed whenever you call it with that name. Okay. So you can say function is a code block. It is having some meaningful name. The code block is performing some specific task, but this task will get executed only when you call it. Get it? So when you're calling means you are requesting it to get executed. Whatever is being defined, please execute that. Okay. So when you call, the logic, whatever is defined, that gets executed. And during call, you can pass some values to it. On those values, this function will operate. This function will operate on those values. Get it? And possible that function at the end may return also some result. And if you want, you can collect that result. Optional, it's not necessary every function will return, but at the end, this function can return some result. And that result, you can collect it in some variable. Get it? So always remember functions are defined first and then only you call them. Okay. And only defining is of no use if you are not calling it. When you're calling means you are requesting it to get executed. Get it? Like you have purchased a Mercedes or you have purchased an Harley Davidson bike and just you have kept that bike in the parking. Just parking में रखी है एंड रोज सिर्फ देखते हो, कभी भी उसको इग्निट नहीं करते हो, चाबी लगा के फिर उसको गियर में डाल के घुमा के नहीं लाते हो, तो क्या फायदा है ना उसको खरीदना। सेम या फंक्शन डिफाइन करके कोई फायदा नहीं है जब तक उसको कॉल नहीं करते। तो व्हेन यू कॉल इट, यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट। व्हेन यू आर कॉलिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग इट टू गेट एग्जीक्यूटेड एंड यू कैन कॉल वन डिफाइंड फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। एक बार डिफाइन किया हुआ फंक्शन चाहिए उतनी बार आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। गेटिंग? तो सिंपल टर्मिनोलॉजी क्या याद रखना है? फंक्शन, a named code block. It's a code block. Some meaningful name is given, and that code block is performing some specific task whenever called. At the time of call, you can pass values to it, and at the end, after the task is performed, it may return some result as well. Getting? And functions are having two parts: definition and calling. You have to define it first, and then you can call it. Calling can be done any number of times. As many times you want, you can call it. And every time you can pass different value. The same function can operate on different values. That is what benefit you get. Getting? So, syntactically. तो याद रखना है फंक्शन पहले डिफाइन होता है एंड फिर ही वो कॉल होता है। कॉलिंग आप कितनी बार करना है उतनी बार करो।
once defined, can be called as many number of times as you want. And every time when you call, you can pass different values to it. उसको अलग अलग values आप भेज सकते हैं. And function optionally at the end कुछ result भी return कर सकता है. ठीक है? See, functions are reusable block of code. Why we call reusable? Because once defined, you can call it any number of times. एक बार डिफाइन किया तो आप उसी फंक्शन को चाहिए उतनी बार कॉल कर सकते हैं ना. तो एज मेनी टाइम्स यू कॉल यू आर रीयूजिंग इट. करेक्ट. So it is a reusable block of code designed to perform a specific task. करेक्ट. फंक्शंस लिखने ही ऐसे है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक काम ही कर रहा है, उसको मल्टीपल काम नहीं देना है. गेटिंग ऑन. जैसे घर में अगर कुछ फंक्शन है, घर में अगर शादी है एंड किसी एक एल्डर पर्सन ने तय किया सब मैं ही करूंगा, मैंने I will only look after printing card, then venue, then decoration, then catering, everything I will only do. So वो प्रोग्राम फ्लॉप शो होने वाला रहता है. बट उसी वो एल्डर पर्सन ने काम डिवाइड किया, मीनिंग काम अलग अलग डिवाइड किए एंड फिर घर में बाकी लोगों को वो हैंड ओवर किया कि यू टेक केयर ऑफ इनविटेशन, यू टेक केयर ऑफ डेकोरेशन, यू टेक केयर ऑफ केटरिंग. तो वो फंक्शन परफेक्ट होने वाला है क्योंकि अलग अलग लोगों को काम दिया है एंड ही इज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, जस्ट चेकिंग एवरीथिंग इज डूइंग गोइंग फाइन ऑन. तो इनको स्पेसिफिक काम ही दिया है, एक से ज्यादा काम नहीं, सिर्फ डेकोरेशन, सिर्फ केटरिंग, सिर्फ इनविटेशन. तो एज स्पेसिफिक काम दिया है, इट इज ऑलवेज बेटर. प्रोग्रामिंग में भी वैसी है, वो फंक्शंस को एक से ज्यादा काम नहीं देना चाहिए. गिव स्पेसिफिक टास्क ओनली. एंड फंक्शंस पहले डिफाइन होता है एंड फिर उसको बाद में आप चाहिए उतनी बार कॉल करते हो. कॉलिंग मीन्स ओनली इन्वोकिंग, इन्वोकिंग मीन्स ओनली रिक्वेस्टिंग इट टू गेट एग्जीक्यूटेड. वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्लीज एग्जीक्यूट दैट टास्क. A function runs only when it is called. Remember, only defining no use. मैंने कहा ना कि आपने हायाबुसा बाइक खरीदा है बट सेफ पार्किंग में रखा है, उसको चाबी लगा के गियर में डाल के एक्सेलरेट करके घुमा के लाते नहीं हो तो क्या फायदा है. मीनिंग एग्जीक्यूट. गेटिंग. तो व्हेन द फंक्शन एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, जब कॉल करोगे तभी एग्जीक्यूट होगा. एंड जब आप कॉल कर रहे हैं उसको आप लोग वैल्यूज पास कर सकते हैं. सो बेनिफिट क्या मिलता है कि एक ही लॉजिक अलग अलग वैल्यूज पे ऑपरेट हो सकता है. द सेम लॉजिक कैन ऑपरेट ऑन मल्टीपल वैल्यूज. फंक्शंस कैन टेक इनपुट and may return a single value as result. And major programming languages में functions बहुत important building block है. बहुत सारे programming language में problem solving functions के तौर पे ही होता है कि कोई भी problem solve करना है तो उसको छोटे छोटे problem में divide करो and फिर each problem का एक अलग सा function लिखो and फिर उन functions को कहीं तो main program में call कर दो. So as I said, functions are fundamental in nearly every program. Take from Pascal, you take Pascal. I've done my career, I started with Fortran also. हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का फोर्ट्रन में करते थे, फिर मैंने पास्कल में भी किया हुआ है प्रोग्रामिंग, फिर सी है, सी प्लस. अभी ये सब आउटडेटेड लैंग्वेजेस हो गए. करेक्ट. मेरा पेपर उसके ऊपर ही प्रेजेंटेड है, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम 1950. I hope it is clear. The concept of function is clear. What benefits you get? So lot of benefits we get. एक बेनिफिट हमें मिलता है कि रिडंडेंसी अवॉइड होती है. रिडंडेंसी अवॉइडेड. रिडंडेंसी मीनिंग रिपीटेशन. If the same logic is getting repeated in the code, only the values on which that logic is operating is changing. जिस वैल्यू पे वो लॉजिक ऑपरेट होने वाला है ना, वो वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है बट लॉजिक सेम है. तो why to write that logic again and again? Put that logic once only in a function and call that function any number of times as you want. एकदम बेसिक, एकदम कॉमन एग्जांपल में देता हूं. लाइक जैसे अगर किसी ने कहा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का काम करना है, तो पहले आप लॉजिक किसके लिए लिखोगे? एक्सेप्टिंग मैट्रिक्स.
अब मैट्रिक्स एक्सेप्ट करना है तो एक लाइन का काम नहीं, उसके लिए नेस्टेड लूप लिखना पड़ेगा, एक आउटर फॉर लूप जो रो टाइम चलेगा, इनर फॉर लूप जो कॉलम टाइम चलेगा। ऐसा दूसरा मैट्रिक्स है। तो अगेन, अगर फंक्शंस नहीं लिखते हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट द सेम एक्सेप्टिंग लॉजिक अगेन फॉर ओनली मैट्रिक्स बी। ओनली मैट्रिक्स चेंज हुआ है, लॉजिक सेम। फिर आप लिखोगे एडिशन का लॉजिक। फिर मुझे तीनों मैट्रिक्स प्रिंट करने हैं, तो प्रिंटिंग का लॉजिक। अब प्रिंटिंग भी एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, एक एक एलिमेंट्स प्रिंट करना है। तो एक रो के सारे कॉलम्स एक लूप, और ऐसे जितने रोज है उसका आउटर लूप, नेस्टेड फॉर लूप रहेगा। If I want to print all the three metrics, so print A, print B, print C. Can you see the same printing logic is repeating three times, only the matrix is changing. Accepting logic is repeating two times, only the matrix is changing. So why not in this case? Okay, divide the problem like this. Problem into smaller problem. Complex problem into smaller. Top-down approach. क्या करो? प्रॉब्लम वन एक्सेप्ट, प्रॉब्लम टू। भले प्रॉब्लम टू जो है एडिशन, वो रीयूज नहीं होता रहेगा तो भी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है। गेटिंग? प्रॉब्लम थ्री, दैट इज प्रिंटिंग। एंड फिर इन सबके लिए अलग अलग क्या लिखो? फंक्शंस। गेटिंग? एंड फिर इन फंक्शंस को कहीं तो मेन प्रोग्राम में कॉल करो। एंड कॉलिंग बहुत एलिगेंट दिखेगा ना, क्योंकि कॉलिंग में वो रिपीटेड लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक अलग से फंक्शंस में लिख दिया है। कॉलिंग में आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? फंक्शंस कॉल, एंड हियर इफ यू वांट यू कैन कॉल द सेम फंक्शन ट्वाइस, जस्ट पास मैट्रिक्स डिफरेंट। गेटिंग? प्रिंटिंग का लॉजिक तीन बार कॉल किया, मैट्रिक्स अलग अलग पास। Getting or no? So that benefit you get. So one benefit what you get, code redundancy avoided, repetition of logic avoided. The repeated logic you put once only within the function, and you call that function any number of times. And every time you can pass different parameters. With that, automatically the main code looks more cleaner code, elegant code दिखता है। राइट और नो? जैसे अगर अज्यूम करो मॉम ने डाइनिंग टेबल पे ही पकाना शुरू किया और वही वो सर्व भी कर रही है। गेटिंग और नो? इट डजंट लुक एलिगेंट। तो वो किचन में सब प्रिपेयर करती है, एंड जो भी प्रिपेयर किया वो बोल में सब ट्रांसफर करती है, अलग अलग बोल में, एंड फिर डाइनिंग पे लगाती है ना। एंड डाइनिंग पे वो सब अलग अलग बोल्स में वो ट्रांसफर करके लाया हुआ रखा है, तो वो डाइनिंग पे कितना एलिगेंट दिखता है, क्लीनर। और ये बनाने का पूरा प्रोसेस हाइड हो गया ना किचन में, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। किचन में उसने कैसे बनाया वो हाइड हो गया। यहाँ से वो बनाया हुआ चीज सब यहाँ बोल में ट्रांसफर किया है, डाइनिंग पे देखोगे कितना क्लीन एलिगेंट। यार ऑल्सो सेम थिंग, वो फंक्शंस के लॉजिक वो फंक्शन में हाइड हो गए, मेन कोड में आप सिर्फ वो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। करेक्ट? तो योर मेन कोड बिकम्स एलिगेंट, इट लुक्स मोर क्लीनर कोड, मैनेजेबल होता है। करेक्ट? Example, like if you want to do any modifications, अगर फंक्शंस नहीं है तो जिधर जिधर लॉजिक रिपीट किया है सब जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा। फंक्शन लिखा है तो एक ही जगह पे चेंजेस करो, वो फंक्शन के अंदर वो चेंजेस सब जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ओके, बग फिक्सिंग इफ यू वांट टू डू, bug fix means you're understanding, no? Like if there is some logical error, you're not getting the expected output. So is the bug to be fixed everywhere or only at one place? जहां फंक्शन है वही बग फिक्स करना है, वो ऑटोमेटिक सब जगह पे रिफ्लेक्ट होगा wherever you have called it. Getting? So lot of benefits, and another benefit you can get that it gives you a problem dividing approach. A complex problem, you can divide it into smaller problem. And then for each small problem, you can write functions. And then in an elegant way, you can call that functions in the main code. So it gives you one problem solving approach also. उसको DNC कहते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये पढ़ा भी रहेगा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स वगैरह में किया रहेगा तो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऐसा पढ़ा रहेगा सब्जेक्ट। उसमें एल्गोरिथम स्ट्रैटेजीज पढ़े रहेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी मेथड,
डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच बाउंड, ये स्ट्रैटेजीज पढ़े रहेंगे, आई होप रहेगा, याद नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, तो मेन बेनिफिट रिडंडेंसी अवॉइड होती है, कोड एलिगेंट दिखता है, कोड मैनेजेबल होता है, बग फिक्सिंग इजी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेटर है बिकॉज वी डिवाइड top down approach complex problem into smaller problem. So lot of benefits you get, few I have listed here. One is reusability. Does it give reusability of the code? Yes. जो redundant code है वो आपने एक ही बार उठा के function में डाल दिया, तो write once. And can you call it any number of times? Yes. Run many times. Organize code into smaller part. That is top down approach. Divide main problem into smaller problem, and then for each small problem write separate functions and then call those functions. Make code easier to read and maintain. आपका मेन कोड बहुत एलिगेंट दिखता है क्योंकि मेन कोड में सब कोड नहीं है ना, वो कोड सब हाइड हो गया है, वो सारे लॉजिक्स किसके अंदर हाइड हो गए, फंक्शंस। तो मेन कोड यू आर जस्ट कॉलिंग दैट फंक्शन, तो इट लुक्स more readable, maintainable. Changes, if you want to do any changes, you have to do change only at one place. If you want to fix the bug, fix it at one place. Does it become localized? Bug fixing localized होता है, समझ रहा है ना, फंक्शन नहीं रहता था और एक ही कोड है, तो पूरे कोड में बग ढूंढते बैठना पड़ेगा। इट इज लाइक यू नो कि आपके दांत में ही दर्द है, तो इट इज बेटर टू गो टू अ डेंटिस्ट ओनली ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ एमडी मेडिसिन। एमडी मेडिसिन के पास गए तो वो पूरा बॉडी स्कैन अननेसली करते बैठेगा, पैसे कमाने का ही रहता है उसको, गेटिंग? तो unnecessary he'll keep doing all the tests and all, but when you know that the problem is in the teeth, going to a dentist is better, क्योंकि डेंटिस्ट का बग फिक्सिंग लोकलाइज होगा ना, लोकलाइज मीन्स वो उसी स्पॉट पे ही प्रॉब्लम ढूंढने का काम करेगा, गेटिंग? तो आई एम जस्ट रिलेटिंग इट, concept clear? Okay, so all the benefits are clear to you. You can just give me quick confirmation. Then lot many things to learn. How to define user defined function, define कैसे करना है, call कैसे, parameters कैसे pass, सब चीजें देखनी है, ठीक है? Okay. Okay, okay. Then there Yes, are two types of functions in JavaScript. One is built-in function and another is user defined function. Built-in means which is coming along with JavaScript only. You don't have to create on your own, already provided by that software. Software in the sense it's already incorporated in your browser, और सर्वर साइड रहेगा तो वो नोड में रहेगा। इफ इट इज सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट तो वो नोड में ही वो अवेलेबल है, एंड इफ इट इज क्लाइंट साइड तो इन योर ब्राउजर ओनली दीज फंक्शंस आर incorporated and you can use it in your JavaScript. So they are called built-in. Okay, and second is user defined. Now user defined meaning functions which are created by the programmer as per the requirement, customize है, getting? Relate अगर करना है, if I want to do the analogy of this concept, so you can say like when you go to buy clothes, so if you go to mall, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग साइजेस के कपड़े होते हैं, बट उन्होंने वो स्टैंडर्ड साइजेस रखे हैं, getting or no? एस है, एम है, एक्सएल है, whatever, and different वेस्ट साइजेस and whatever. तो वो सब स्टैंडर्ड रखे उधर शोरूम में, हमें जो चाहिए वो हम पिक करते हैं नीड के हिसाब से, अगर वो फिट हो रहा है ओके, बट जितने भी वहां शोरूम में एक भी नहीं फिट हो रहा है, तो बेस्ट यू गो टू द टेलर, एंड टेलर को मेजरमेंट दे के अपने डिजाइन के हिसाब से करवा के लेते हो, तो दैट बिकम्स व्हाट, कस्टमाइज, यूजर डिफाइंड। तो टेलर से बनवा के लिया है वो यूजर डिफाइंड, एंड ऑलरेडी शोरूम में रखा है, उसमें से जो आपको सुटेबल लगता है वो पिक करते हो, दैट बिकम्स बिल्ट इन, गेटिंग? आई एम जस्ट मेकिंग अ एनालॉजी, रिलेट कर रहा हूं। तो यहाँ भी वैसी है, ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डेवलप्ड है, वो चाहिए तो ले लो, बट उसमें से आपका एक भी काम का नहीं है करंटली, देन यू विल क्रिएट इट ऑफ योर ओन, दैट इज यूजर डिफाइंड। सो एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड अनदर है बिल्ट इन।
Now, in this topic and in the subsequent lecture, we are going to focus on user defined. हम लोग किस पे ध्यान देने वाले हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे, कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिफाइन कैसे करता है, कॉल कैसे करता है, पैरामीटर्स कैसे पास होता है, पैरामीटर की टेक्निक्स क्या है, वो सब देखना है. ठीक है. ओके, तो दिस पार्ट इज आई होप इट इज क्लियर. मूविंग टू this one, that is user defined functions. So user defined functions means functions which are defined by the programmer as per the requirement, whatever the requirement is. So here the logic, the calculations, all will be according to the need. It will be according to the need. So user defined functions are functions which are defined by the programmer as per the requirement. Getting? Okay. Now, the logics you can modify also later, because as you are only defining it, you have that control. You can change the logic later. बट बिल्ट इन फंक्शन जो होता है उसका लॉजिक हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे है वही यूज करना है. गेटिंग ऑन? तो शोरूम वाले बोलते हैं कि ये सब हमने रखा है, इसमें से जो चाहिए वो खरीदो. हाँ, उसको चेंज फिर वो ऑल्टरेशन को देना पड़ता है, बट उन्होंने डिस्प्ले पे जो रखा है वो ऐसे ही है. इसमें से चाहिए तो लो. बट एक भी पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा, वी गो टू द टेलर एंड वी गिव द मेजरमेंट्स एंड आवर ओन डिजाइन्स एंड वी मेक इट. दैट इज यूजर डिफाइंड. तो here modification possible. Built in we cannot modify. We can only use those functions. Okay. अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन करना है वो सब बताता हूं. The functions created by the programmer based on the requirement of the program. ठीक है, जैसे जरूरत है, are known as user defined functions. So functions जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूजर डिफाइंड. अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाना है? एंड टुडे ओनली द टॉपिक व्हेन आई स्टार्टेड दैट टाइम आई टोल्ड फंक्शंस को दो पार्ट होता है. फंक्शन पहले डिफाइन होता है एंड देन यू कॉल द फंक्शन. You can define it once and you can call it any number of times. Getting? So unless and until you call the function, that is not going to get executed. वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं कर रहे. ठीक है, तो पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ हाउ टू डिफाइन इट? देयर इज अ कीवर्ड फंक्शन. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ये नेम्ड फंक्शंस ही पढ़ने वाले हैं. बाद में एक टॉपिक आएगा कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस, एरो फंक्शंस. तो एरो फंक्शंस के ऊपर भी इन डिटेल बात करना है. Arrow functions introduces declarative coding or functional programming. Don't confuse with functional programming and procedure-oriented programming. Their approaches are different. तो functional programming भी कैसे जावास्क्रिप्ट में होती है वो देखेंगे. Anonymous functions या उसको कुछ लैंग्वेजेस में लैम्बडा एक्सप्रेशंस कहते हैं, या यहाँ इसको एरो फंक्शंस कहते हैं. तो वो अलग पढ़ेंगे, वो इधर मिक्सअप नहीं, वो एक टोटल अलग टॉपिक रहेगा. यहाँ functions with name. So function is the keyword. This is a keyword. Then the name of the function. It should be a valid identifier. Identifier naming rule follow करना चाहिए. Getting? तो meaningful name देना. It should follow the identifier naming rule, like combination of letters, digit, underscore, currency sign, cannot start with digit, cannot be a reserve word. वो सब पता है आपको. ठीक है? Case sensitive होता है. Then round bracket and then the list of parameters. JavaScript is loosely typed, remember. So you just have to give the list of parameters. No concept of data type and all. TypeScript में होता है, JavaScript में नहीं है. Just parameters के नाम लिखते जाओ. Now you'll say, what are parameters? They are variables only. They are local variable. Means they can be used only within the function body. Function body के अंदर ही ये use कर सकते हैं. They are variables. They are local variable. And they are placeholders. Means when you call the function, at that time, whatever value you pass will get copied here.
मीन्स जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो कॉल करते समय जो वैल्यूज पास करोगे वो ये पैरामीटर्स में आते हैं. इसलिए मैंने कहा दे एक्ट लाइक अ प्लेस होल्डर, एंड एट द टाइम ऑफ कॉल वॉट एवर एक्चुअल्स यू पास दे गेट कॉपीड हियर, and then these parameters you can use within the function body. Getting? तो ये parameters की list है, comma separated list, फिर round close करना है, फिर open brace, close brace. इसमें ये पूरा function का body आएगा. Whatever task it is doing a simple single line task, any complicated calculations, whatever. The entire body of that function is enclosed in open brace, close brace. It is a block. जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक कैसे इंडिकेट होता है? पेयर ऑफ ब्रेस पैकेट. So open brace, close brace, that will designate the body of that function. And whatever is written within that body will get executed whenever you call this function. And इस function के अंदर लास्ट में ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है. रिटर्न सम वैल्यू. ओनली रिटर्न लिखना भी अलाउड है. ओनली रिटर्न सेमीकोलन एंड रिटर्न सम वैल्यू. इसके ऊपर एक अलग स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट ये पूरा पार्ट क्या है? ऑप्शनल है. याद रखना, मैं जो कुछ स्क्वायर में लिखता हूं सिंटैक्स देते समय, एनीथिंग व्हाट आई राइट इन अ स्क्वायर इज ऑप्शनल. See here also anything which I write in square is optional. Means it's not necessary that to the function you have to pass parameter. Sometimes you can write a function without parameter as well. And every function should return something at the end is also not compulsory. Return is like a flow transfer instruction. We have studied two flow transfer instruction in the past lectures, break and continue. Break and continue are flow transfer. Same way return is also a flow transfer instruction. Okay, so I'll tell you about it. Basic इतना याद रखना है. Return stops the execution of the function. Function का execution रुका देता है. Takes the control to the place where function is called. जहां function call किया वहां control लेके जाएगा. And there it can return this some value. And then after that it will continue executing ahead. जहां कॉल किया है उसके आगे से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा. ठीक है? So this becomes function definition. So function definition start with keyword function, then meaningful function name. It is a valid identifier. It should follow identifier naming rule. Then the list of parameters in round bracket, list separated by comma, only parameter name, no concept of data type and all, loosely typed language है. Parameters की list देनी है. They are variables, they are placeholders. Whatever value you pass at the time of call will come in this parameter. And these parameters you can use within the body. And the entire body of that function is enclosed in pair of brace bracket. And within the body at the end, optional, you can have return some value. Return terminates the function and takes the control to the place where it is called. जहां call किया वहां लेके जाएगा. There it will give this some value and control execute and continue executing ahead. जहां कॉल किया है उसके आगे से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा. अब कॉल कैसे करोगे? फंक्शन का नेम देना है. गेटिंग? फिर राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज पास करने. ऑप्शनली अगर ये कुछ रिटर्न करने वाला है तो आप किसी वेरिएबल में वो वैल्यू कलेक्ट करके देख सकते हो. तो यू आर कॉलिंग इट बाय मेंशनिंग द नेम, राउंड ब्रैकेट एंड द वैल्यूज. दीज वैल्यूज आर कॉपीड इन दैट पैरामीटर्स. ये जो वैल्यूज है वो उस पैरामीटर में कॉपी होता है. फिर कंट्रोल किधर चला जाएगा? फंक्शन को. फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. एंड जब फंक्शन खत्म होता है इट विल कम बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड. जहां कॉल है वहां आ जाएगा और उसके आगे का कोड कंटिन्यू. इट विल कंटिन्यू रनिंग द नेक्स्ट कोड. एंड इफ इट इज रिटर्निंग सम वैल्यू, दैट वैल्यू यू कैन कलेक्ट इन सम वेरिएबल. ठीक है? ओके, सो द बेसिक सिंटैक्स, आई होप इट इज क्लियर. डेफिनेशन ऐसा है, पहले कीवर्ड फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन का नेम,
राउंड ब्रैकेट एंड देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएबल्स ही है ये, लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ ये फंक्शन तक है, याद रखना। इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टिल फंक्शन and they are placeholders. In that, what is going to come? Value. Which value? The value you pass at the time of call. कॉल करते समय जो वैल्यू पास करोगे वो इसमें आ जाएगा। फिर ये पैरामीटर्स आप अंदर कोड में यूज कर सकते हैं। तो ये बॉडी है, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस, लास्ट में ऑप्शनल रिटर्न। So what does this definition indicate? Definition indicate the name of the function, what parameters it is going to take, and the code which it is going to perform. So this whole function, this is the name of the function, the parameters on which that function is going to operate, and the logic. तो जब भी हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइन होता है, मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है, क्या पैरामीटर्स लेने वाला है, और क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। Unless and until you call this function, it is not going to get executed. Getting? Code won't execute unless and until it is called. Calling means requesting to get executed. तो जब कॉल करते हो तब कंट्रोल जहां फंक्शन डिफाइन किया है ना, कंट्रोल वहां जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, काम खत्म करके वापस आएगा, एंड आने के बाद जिधर कॉल किया था उसके अगले वाले कोड से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देखो, यू कैन कॉल इट बाय मेंशनिंग द नेम, देन यू कैन पास वैल्यूज, these values are copied here, and when the function is over, when it come back, it may return something which you can collect. Can we call this function any number of times? Yes. एक बार डिफाइन किया हुआ फंक्शन चाहिए उतनी बार कॉल कर सकते हो, और हर बार आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सो कॉलिंग मीन्स रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन। जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल वहां ट्रांसफर होता है, याद रखना। मीन्स इधर का लॉजिक सस्पेंड हुआ है, टेम्पररीली सस्पेंडेड, एंड द कंट्रोल गोज देयर। सीपीयू का कंट्रोल वहां जाएगा, फंक्शन रन करेगा, कंप्लीट करके वापस वहीं आएगा, और ये रेज्यूम होगा। ये जो अभी टेम्परली सस्पेंड हुआ था वो रेज्यूम होता है, वेकअप होता है। ओके, तो आई होप द बेसिक सिंटैक्स इज क्लियर टू यू गाइस। जस्ट द एक्सप्लेनेशन, वो कीवर्ड फंक्शन जो लिखा है, कुछ लैंग्वेजेस में डेफ है, लाइक इन पाइथन यू हैव टू राइट डेफ, हियर इट इज फंक्शन। सम लैंग्वेजेस देयर इज नो सच थिंग, डायरेक्टली रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, लाइक जावा और सी। ठीक है, पीएचपी में भी वही है, फंक्शन कीवर्ड ही लिखना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग। सो फंक्शन is the keyword, indicates the start of the function definition, and any function which you want to define in JavaScript, you have to start with the keyword function. Is mandatory to create functions in JavaScript. Then comes function name. It should be a valid identifier. Naming rule follow होना चाहिए. Combination of letters, digit, underscore, currency sign cannot start with digit. वो सब याद रखो, केस सेंसिटिव है, कीवर्ड नहीं आ सकता है, नो लिमिट ऑन लेंथ, ऑल दैट रूल्स इट इज फॉलो। फिर राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर्स, इट इज ऑप्शनल। कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो पैरामीटर्स नहीं लेते, ठीक है, तो ऑप्शनल कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। देन कम्स द बॉडी ऑफ द फंक्शन, between open brace, close brace, function body. It can contain any simple logic to any complicated logic. It can contain call to some other function also, हो सकता है। याद रखना है कि अगर हमने एक फंक्शन फू बनाया है, ओके, एंड फिर मैंने एक फंक्शन बार बनाया, तो बार के अंदर अपने फू कॉल कर सकते हैं, मीन्स विद इन बार यू कैन गिव कॉल टू फू, विच इज लीगल। ठीक है, मैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कॉल हो सकता है। So it contains statements which function performs, but when it is going to perform this body, ये body तभी execute होगा जब function call होता है।
Unless and until it is called, the function body doesn't execute. एंड फंक्शन बॉडी में लास्ट में कहीं तो आपने अगर ऐसा लिखा है रिटर्न सम वैल्यू, रिमेंबर हर फंक्शन में रिटर्न होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। गेटिंग? एंड रिटर्न करते समय रिटर्न सम वैल्यू कर रहा है ऐसा भी जरूरी नहीं, सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हो। ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, बट इफ इट इज देयर then it is going to return some value back to the place where it is called. माने जिधर वो फंक्शन कॉल किया है उसको वो कुछ वैल्यू ला के दे रहा है, जिसको हम कॉलर कहते हैं। ओके, तो ऑप्शनल विच रिटर्न सम वैल्यू बैक टू द कॉलर। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर विद इट, राइट? Sir, जस्ट हाँ, yes. Sir, I have a question. Function and methods are both are same, yeah, नो, there's some मेथड्स slightly आर difference. फंक्शंस विद इन द क्लास, functions only, but when you write that function within the class body, within a class body, when you write, it becomes a method. And to invoke it, we need a object. Means object के context में invoke होता है। Getting? Question legal है आपका। तो अगर उसको कॉल करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट फू, एंड फिर उसको पैरामीटर पास करते हो, वो कुछ रिटर्न करेगा, वट। बट इसको इन्वोक करने के लिए किसके कॉन्टेक्स्ट में ही इन्वोक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट डॉट फू, देन इट बिकम्स अ मेथड बिकॉज इट बिलोंग्स टू दैट क्लास जिसका ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग क्लास का है तो उसके अंदर है। एंड टू कॉल एनी फंक्शन यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स इसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कॉल करने की जरूरत नहीं, तो वो फंक्शन है। तो मेथड्स भी फंक्शन ही होता है, बट फंक्शन जो क्लास के बॉडी के अंदर लिखते हो एंड वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही कॉल होता है, तो उसको मेथड है। ये अभी जब ओओपी का पार्ट आएगा तब उसमें भी पता चलेगा। जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, जावास्क्रिप्ट में भी आप क्लास बना सकते हैं, क्लास में कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, फिर वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट बना के फिर वो मेथड्स कॉल करें। तो एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी है। फंक्शंस व्हेन belong to a class, then we call them as method, and when they are not part of any class, they are functions। ठीक है? So, sir, we can say that function is a independent. हाँ, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू इन्वोक इट। हाँ, ऐसे बोल Oh, सकते हैं। हाँ, got it, sir. इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शंस है, हम इसको किसी क्लास के अंदर नहीं लिखने वाले हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट फंक्शन लिखेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करते समय किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, मैं डॉट ऑपरेटर करके मैं, मुझे ऑब्जेक्ट बना के फिर डॉट एंड फिर मुझे कॉल करना है। तो दिस वे आई डोंट हैव टू डू, ये पार्ट ही नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करना है। ठीक है? तो वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ओके, फिर आते हैं ये फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे कुछ। नहीं तो कहोगे सब थेरोटिकली एक्सप्लेन किया है। नो, वी विल बी टेकिंग एग्जांपल्स, बट वो एग्जांपल के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो एक बार क्लियर हो गए, देन वी कैन टेक द एग्जांपल। सो देयर आर टू थिंग्स, formal parameters and actual argument. What are they? So you can say formal parameter and actual argument are the values which you're either passing or the values on which the operation is taking place. Getting? So you can say like that, when you're calling the function and at the time of call, when you're passing some values. Now that values can be constant values, they can be variables, they can be expressions, anything. करेक्ट? लाइक यहाँ मैंने वेरिएबल लिखा है, यहाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखा है, यहाँ मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, x+5, वट एवर इट इज। बट द वैल्यूज विच आई पास एट द टाइम ऑफ कॉल, कॉल करते समय जब मैं कुछ वैल्यूज पास करता हूं, दे आर एक्चुअल्स। गेटिंग? एंड देन दीज वैल्यूज आर गेटिंग copied in the function definition.
जहां कहीं आपने फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, फंक्शन फू, तो in that function definition these values are passed. So here you may be having a, b, c. Okay, so in this they act like a placeholder, so these values are copied here. X value will come in a, 10 will come in b, x plus 5 will come in c, and then those variables which you are going to use inside the code body, means on those variables the operations are going to happen. अंदर जो भी लॉजिक लिखा है वो लॉजिक इन वेरिएबल्स पे काम करने वाला है. दे आर फॉर्मल्स. सो ईदर यू कैन कॉल देम एज डमी, डमी भी बोल सकते हैं, फॉर्मल बोलो या डमी बोलो. तो डमी पैरामीटर्स मींस दे आर द वेरिएबल्स which are used within the definition, function definition में यूज होता है, and they are receiving value whatever is passed. So whatever values are passed at the time of call, that values are received here. They act like a placeholder. And at the time of call, whatever values you are passing, they are actuals. तो ये actuals है और ये formals है. ठीक है, formals ये हमेशा variables ही होते हैं क्योंकि वो प्लेस होल्डर है, उसमें वैल्यू आने वाला है, एंड उसमें जो वैल्यू आया है वो वैल्यूज आप अंदर ऑपरेट करते हो. फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी ऑपरेशन होने वाला है वो उन वैल्यूज पे ऑपरेट होगा. तो फॉर्मल्स आर ऑलवेज वेरिएबल्स. They are placeholders. They will receive value from outside, and on those values the whole function is operated. वो पूरा फंक्शन उन वैल्यूज पे ऑपरेट होगा. एंड एक्चुअल्स क्या होता है? एक्चुअल्स कैन बी वेरिएबल्स, लिटरल्स, एक्सप्रेशन, एनीथिंग. दोज आर द वैल्यूज विच यू आर पासिंग एट द टाइम ऑफ कॉल. कॉल के समय जो वैल्यू पास करते हो वो एक्चुअल्स. ठीक है, और एक्चुअल की वैल्यू किसमें कॉपी होती है? फॉर्मल में. एंड फॉर्मल में आने के बाद फिर वो फॉर्मल सब बॉडी में यूज करते हो. ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर्स, द वेरिएबल्स लिस्टेड इन फंक्शन डेफिनेशन. जहां फंक्शन डिफाइन किया ना, फंक्शन, फंक्शन नेम, राउंड ब्रैकेट, एंड फिर मैंने जो वेरिएबल्स वहां लिस्ट आउट किए वो सारे क्या होते हैं? फॉर्मल. दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू आने वाली है, वैल्यू आने वाली है, देयरफॉर इट इज अ प्लेस होल्डर फॉर द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल की वैल्यू उनमें कॉपी होती है, याद रखना. एंड हु आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स? द रियल वैल्यूज विच यू पास एट द टाइम ऑफ कॉल, जो मैंने बताया, द वैल्यूज पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द कॉल. ओके, एज एन एग्जाम्पल दिखाता हूं. सी, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है एड. फंक्शन डेफिनेशन वी स्टार्ट विद द कीवर्ड फंक्शन, then the name of the function is add, then I'm passing two parameters. ये जो दो पैरामीटर्स है ये फॉर्मल है, ये प्लेस होल्डर है, ये वेरिएबल्स मैंने डेफिनेशन में लिस्ट आउट किए, इनमें एक्चुअल वैल्यू आने वाली है, एंड दीज वेरिएबल्स आर यूज इनसाइड द बॉडी. दे आर ऑपरेटेड. द इंटरनल ऑपरेशन इज डन ऑन दोज वेरिएबल. ठीक है, तो इनसाइड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग दैट एक्स एंड वाई, कीपिंग इन वन लोकल वेरिएबल. ये टेम्पररी लोकल वेरिएबल लेट है ना. लेट से आपको पता है स्कोप ब्लॉक लेवल, फंक्शन लेवल, तो इसका स्कोप ये फंक्शन लेवल तक है. एक्स प्लस वाई एस में, एंड फिर रिटर्न एस, जो भी एस है वो रिटर्न होगा. ठीक है, एंड देन यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन console.log add and 2,6. तो यहां जब कॉल करते समय, कॉलिंग मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग इट टू गेट एग्जीक्यूटेड. So at the time of call, whatever value you are passing will get copied in this formal. वो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होता है, एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होती है, फिर वो स्टैक फ्रेम में वैल्यू देता है, वो स्टैक फ्रेम पुश होता है, वो इंटरनल चीजें मैंने एब्स्ट्रैक्ट रखी है. तो दैट 2 will come in x, 6 will come in y. Okay, 2 will come in x, 6 will go in y, then it will do the addition. 8, s में 8 आ गया. ठीक है, एंड फिर वो हम रिटर्न कर रहे हैं 8. रिटर्न, जैसे ही रिटर्न आया फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप.
return stops the execution of the function. ऐसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करेगा, इट विल टेक द कंट्रोल टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड. तो देखो अभी फंक्शन कॉल हुआ, 2 गया, 6 गया, फिर कंट्रोल वहां आ गया, फिर ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर रिटर्न आया, रिटर्न स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन, टेक्स द कंट्रोल बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड. तो इधर कॉल था, कंट्रोल वहां आ गया, ये वैल्यू 8 लेके आया, ये 8 लॉग को दिया, तो अगला एग्जीक्यूशन कंटिन्यू. What is the next statement? Log. So that 8 value is given to log. Log will display on the monitor and continue with the next line. ठीक है? So in this case, x and y are formals and 2 and 6 are actuals. Actuals can be anything. Remember, actuals can be literals, they can be variables, they can be expressions, anything. But formals are strictly supposed to be variables. Why they are strictly supposed to be variable? Because they are placeholder. उसमें वैल्यू आने वाला है, एक्चुअल वैल्यू उसमें जाके कॉपी होगा. ठीक है? तो इन दिस x and y are formal and 2 and 6 are actuals. एग्रीड. तो ऐड जब कॉल हुआ तो 2 x में गया, 6 y में गया, फिर कंट्रोल वहां चला गया, फंक्शन एग्जीक्यूट, लास्ट में रिटर्न, रिटर्न विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन, टेक द कंट्रोल बैक to the place where it is called, then it will give this value at 8 to log and continue with the next thing. ठीक है? Okay. Okay. Someone wants to Yes, ask sir. something? Huh. Huh. Ask if you want to ask them. Got it, sir. Got it. Okay. ठीक है. I'm taking one demo, func1.html. Then we are defining that function. Suppose add x comma y. Let s for some. ऐसा कोई रूल नहीं है एस में, डायरेक्ट रिटर्न एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो. ठीक है? एंड फिर यहाँ हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड ऐड को कॉल कर रहे हैं. यू आर पासिंग डिफरेंट वैल्यू, जैसे अभी 10 and 20 पास किया, अब ऐसे भी ऐड, एंड देन यू आर राइटिंग ऐड 5, 6 comma add 10, 20 is also legal. Console.log add 10, add 7, 8 is also legal. कितने अलग अलग वे से. इससे क्या प्रूव हो रहा है कि डिफाइन वंस, कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम. यही तो बेनिफिट है ना, कि आप एक बार डिफाइन करो फंक्शन, चाहिए उतनी बार कॉल कर सकते हो. तो पहली बार जब ऐड कॉल हुआ तो 10, 20, 10 जाएगा x में, 20 y, ऐड 30 आंसर आ गया. सेकेंड टाइम पहले ऐड 5, 6 होगा, 11, ऐड 10, 20, 30, फिर वो 11 and 30 ये ऐड हो जाएगा. पहले अंदर वाले ऐड कॉल हो गए, दोनों ने अपने अपने आंसर्स लाए, इसने 11 लाया, इसने 30 लाया, फिर वो दो वैल्यूज इस ऐड को जाएगा. तो 11 and 30, 41, फिर वो 41 जो रिटर्न हुआ वो लॉग को दिया. वैसे यहां देखो, ऐड 10, ऐड 7, 8, तो ये अंदर वाला ऐड पहले कॉल, इट विल रिटर्न 15, फिर 10 and 15, 25, जो ये ऐड रिटर्न, दैट यू गिव इट टू लॉग. ठीक है? यू कैन run and see that code. See, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर्स हैं, 30, 41, 25. Okay, then quick about return statement we will discuss. Then we have to discuss about the ways in which parameters are passed. तो इसमें पोजिशनल टेक्निक है, फिर डिफॉल्ट वैल्यू कंसेप्ट है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, तो उसके बारे में भी हमें बात करना है. ठीक है? तो दैट विल डिस्कस, बट बिफोर दैट
return statement. Remember, return is a flow transfer instruction like break and continue. जैसे ब्रेक लूप में आया, अगर किसी लूप में ब्रेक एनकाउंटर, तो डज इट ट्रांसफर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द लूप? डज इट टर्मिनेट द लूप? लूप को टर्मिनेट करता है एंड कंट्रोल डायरेक्ट लूप के बाहर लेके आता है. इसी जगह पे कंटिन्यू रहता था. तो इट विल जस्ट स्किप द करंट कोड, रिमेनिंग एंड टेक्स द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग, नेक्स्ट इटरेशन को लेके आता है. ये भी फ्लो ट्रांसफर है. Similarly, return is also a flow transfer instruction, but it can be used only within function body. कहीं भी नहीं लिख सकता है function body में. So whenever within the function body your JavaScript engine encounters what? Return. So function body is getting executed one by one, and your JavaScript engine encounters return. The moment it encounters return, it will stop executing the function. Irrespective if this return is within a loop, अगर ये return loop के अंदर है तो loop भी terminate होने वाला है. Obviously, क्योंकि function terminate हो रहा है तो उसके साथ अंदर के loops भी terminate. So within the function body, if your JavaScript engine encounters return, it will stop executing the function and it will take the control to the place where the function was called. जिधर फंक्शन कॉल किया था वहां कंट्रोल लेके आएगा. कॉल किया था इसलिए कंट्रोल यहां आया, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर रिटर्न एनकाउंटर, फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप एंड टेक द कंट्रोल टू द प्लेस वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड, एंड देन इट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट. एंड रिटर्न ऑप्शनली कैन रिटर्न सम वैल्यू. सो रिटर्न का ओरिजिनल काम है स्टॉपिंग फंक्शन एंड टेक द कंट्रोल टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड. अभी कंट्रोल जिधर कॉल किया है वहां तो आएगा, बट इट विल ब्रिंग एंड गिव सम वैल्यू एज वेल. तो वो वैल्यू भी लाके देगा. ठीक है? इफ यू हैव रिटर्न, इफ यू हैव नॉट रिटर्न, जस्ट टर्मिनेट इट. ओके? एंड some may say like if some function doesn't contain return and still I check what it returns undefined. वो undefined रिटर्न करता है. क्लियर? चाहिए तो मैं वो भी एग्जांपल दिखाऊंगा. पहले ये समझ लो. The return statement is a flow transfer statement like break and continue. Like break transfers the flow outside of the loop, continue to the beginning. Same way return कहाँ ट्रांसफर करेगा? Back to the caller. जिधर वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां कंट्रोल लेके आएगा. Wherever the function is called, the control come to that place. ठीक है? And whenever JS engine encounters return, I told you the execution of the function is stopped. Irrespective if that return is within a loop, the loop will also stop. The execution of the function is stopped. The control goes back to the place where it is called. And there, optionally, it can give some value back. ठीक है? See, the function stops executing immediately. Means अगर return के बाद भी कुछ कोड है तो वो कोड रन नहीं होगा. If there is some code after return and JavaScript engine encountered return, उसके बाद का सब कोड अनरीचेबल है. अनरीचेबल मीन्स वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. Stops executing immediately, sends the value back to the caller, control come back to the place where it is called, and then it will continue executing from the next step. So control returns to the place where the function was called. Get it? And हर एक फंक्शन के अंदर रिटर्न होना ही चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है. There can be functions without return statement. It is not mandatory within every function definition. And ये लाइन अब भी जस्ट नाउ मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन में रिटर्न नहीं है एंड स्टिल आप चेक करना चाहते हो कि क्या रिटर्न कर रहा है देखते हैं, तो इट रिटर्न्स अनडिफाइंड. गेटिंग? यू कैन टेस्ट इट.
आप टेस्ट करके देख सकते हो। एग्जाम्पल, यहां मैंने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन फू। अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में वो फू को कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली फू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। नाउ यू आर कॉलिंग दैट फू, इट गोज देयर, इट डिस्प्लेज हेलो वर्ल्ड ऑन द मॉनिटर। ये कंसोल डॉट डॉक मॉनिटर पे ये दिखा देगा एंड इट कम्स बैक, बट एज देयर इज नो रिटर्न, it will return undefined. You can check it. See, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हुआ, फू कॉल हुआ, गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बट फंक्शन खत्म हुआ। तो when the function is over, it will come back to the place where it is called. जिधर कॉल किया वहां आएगा, बट what it is returning undefined, और वही undefined ये लॉग प्रिंट करता है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर रिटर्न नथिंग इज एग्जीक्यूटेड। जैसे फंक्शन बार कंसोल dot log, okay, I am always displayed, then I'm writing return and फिर लिख रहा हूं console dot log not reachable, ठीक है। एंड अभी ये बार कॉल करके देखो, जब बार कॉल होगा इट विल गो टू बार, आई एम ऑलवेज डिस्प्लेड रिटर्न, रिटर्न फंक्शन को टर्मिनेट एंड ब्रिंग द कंट्रोल बैक। और इसके आगे का कोड, ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी, is it displaying I am always displayed, but is it printing not reachable? इसलिए मैंने पर्पसली उधर लिखा ही है नॉट रीचेबल, मीनिंग कंट्रोल यहां आने ही नहीं वाला है। रिटर्न यहीं से कंट्रोल यहां लेके आएगा। बार कॉल हुआ गया, ये लाइन रिटर्न है इसलिए टर्मिनेट एंड कम बैक एट दिस प्लेस। एग्रीड? ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। देखो क्विकली ये एग्जांपल देखो, ये स्टैंडर्ड है जिसमें रिटर्न कर रहा है, एड एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई ऐड किया, रिटर्न एस। यू आर कॉलिंग log, sorry, you're calling add in log 2 6, 2 will go in x, 6 will go in y, add it, store result, then return it. So return आते ही कंट्रोल वापस आएगा और आते समय ये वैल्यू भी देगा कॉलर को, और वो वैल्यू लॉग प्रिंट कर। ये केस में देखो, फंक्शन बार इट इज प्रिंटिंग इट बट नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, एंड स्टिल पर्पसली आई एम ट्राइंग टू चेक। देखो कंसोल डॉट लॉग बार, सो बार कॉल हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, फंक्शन खत्म, बट एज देयर इज नो रिटर्न, इट विल रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। एंड ये वाले एग्जांपल में देखो कि फंक्शन फू एक आउटपुट है, फिर रिटर्न और एक आउटपुट है। विल इट डिस्प्ले वर्ल्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस? नो। रिटर्न है ना, यहीं से फंक्शन टर्मिनेट, तो ये कोड पे आने ही नहीं वाला, कंट्रोल ही वहां नहीं आएगा। देखो फू कॉल हुआ, इट गोज टू फू, फर्स्ट इज हेलो एंड रिटर्न, जैसे रिटर्न फंक्शन टर्मिनेट कम बैक एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट कोड। तो ये हेलो के बाद का वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा। एग्रीड? ओके, तो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, वट एवर आई टोल्ड यू। Yes, sir. Yes, sir. अभी नेक्स्ट इसमें हमें पैरामीटर टेक्निक्स देखना है कि कैसे पोजिशनल टेक्निक है, फिर वेरिएबल लेंथ है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, वो सब पढ़ना है। ओके।